Hello everyone, my name is Khushbu. So today we will discuss about Women Reservation Bill. So Women Reservation Bill के start करने से पहले मैं एक thought के साथ शुरू करना चाहूंगी। अभाव प्रकाश का नहीं, देखने वाली आंखों का है। अभाव आकाश का नहीं, उड़ने वाली पक्षियों का है। इस अकीर्ण बीहड़ पथ पर यह प्रश्न मेरा नहीं, लाखों नारियों का है, लाखों नारियों का है। तो बेसिकली वुमेन यूपीएससी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। जीएस 1 के अंदर सोसाइटी के अंदर भी आता है ये टॉपिक। जीएस 2 के अंदर गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक है। जीएस 3 के अंदर इकोनॉमी, उसके बाद एग्रीकल्चर, इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड जीएस 4 के अंदर अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें या एटीट्यूड एप्टीट्यूड की बात करें तो वुमेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एरिया। तो ये टॉपिक आप ऐसे के अंदर भी काफी हर साल वुमेन से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे का टॉपिक आता ही है। तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट्स को, इस एस्पेक्ट को आप अपने आंसर्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वुमेन रिजर्वेशन बिल। सो रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ पास्ड वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दिस इज 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बिल एक तो हिस्टोरिक है ही, दैट्स व्हाई इट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सेकंड थिंग इज दिस इज द फर्स्ट टाइम देयर इज अ नो ऑपोजिशन इन राज्यसभा। दिस बिll passed has been with full majority, and in Lok Sabha as well. Only two opposite member, like two MP, could not support this bill. Then we will analyze the reason as well. So first of all, now we will understand what we are going to read in this video on this topic. The structure and outline of the topic would be: first we see issues related to women reservation bill. Then we'll see the parliamentarian stand on this bill. What are the evaluation and what is the need of this bill? And we'll analyze the pro and cons, and we will analyze the method suggested by the parliament committee. Now, what are the issues related to Women Reservation Bill 2023? If we see that this reservation will not be applicable in upcoming 2024 Lok Sabha election. Why? Because this bill can only be implemented after delimitation exercise. And what is delimitation exercise? Delimitation exercise मतलब अपनी constituency की boundary को redefine करना, उसके बाद ही ये स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस 2021 के सेंसस जो है वो होने थे, लेकिन कोविड की वजह से या बाकी चीजों, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ये अब या तो 2031 में ही कंडक्ट होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज या तो 2029 में होंगी या फिर 2031 में। तो ये बिल भी जो होगा वो तभी एप्लीकेबल होगा, इसका प्रोविजन। दूसरा है कि इस बिल के अंदर कोई भी ओबीसी वुमेन रिजर्वेशन के बिल के बारे में नहीं बताया गया है। इस बिल के बारे में देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वुमेन इन दिस बिल। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो दिस बिल asks and seeks to reserve 1/3% seats in Lok Sabha, State Legislative Assembly and Delhi Assembly. ठीक है। उसके बाद दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू सीट रिजर्व फॉर SC and ST इन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोक सभा। 455 मेंबर्स ने इस बिल को पास किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया। 215 राज्यसभा के मेंबर्स ने इस बिल को सपोर्ट किया है। नाउ अगर हम इस बिल की बात करें तो व्हाट हैपन ऑल ऑफ सडन कि ये बिल की डिमांड पेश करने लगी, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बिल सब ऑटोमेटिकली ऐसा लगा कि इसको पास कर देना चाहिए? क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? दैट वी विल अंडरस्टैंड। इफ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, तो in 1946 there was a constitution assembly frame, and in the constituent assembly out of 299 members only 15 was women. ओके, सो उस वुमेन जो मेंबर्स थे उस टाइम पे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, लीला रॉय, कमला चौधरी। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वुमेन का काफी सारा बड़ा पोस्टर है। तो इसके अंदर इनके काफी काफी डिफरेंट नेम लिखे हैं। तो जब आप अगर इसको ऐसे के अंदर लिखो रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो आप इनके एग्जांपल्स लिख सकते हो। इनफैक्ट हिस्ट्री GS1 में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं
कि what are the role of women during independence movement or after independence. So you can mention their example as well. See, apart from this, so these women actually were only 15 and they opposed women reservation bill at that time. Can you imagine? They opposed this bill. They said we did not want any kind of special consideration. We don't want any kind of special consideration. It's just that we should be treated with equality. And in the interview with where Hansa Mehta said that women organization to which I have honored, they never ask for reservation or any special treatment. We only ask for social, political, and economic justice and try to provide this. Renuka Roy also said that women will get better chances when they are elected for on the basis of ability, not on the basis of reservation. And if ये चलता रहा प्रोसीजर हमेशा कि विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल कभी फ्रेम नहीं हुआ. लेकिन if we talk about at the global level, 1971, the United Nations requested the government all over the world to make reports on the status of women. क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल में, यूरोप में और काफी जगह फेमिनिन मूवमेंट्स भी चल रहे थे, काफी ज्यादा अवेयरनेस रिलेटेड, सोशल रिलेटेड मूवमेंट चल रहे थे. तो यूएनओ ने बोला कि आप बना लो, सभी गवर्नमेंट को बोला. Hence, in India, in that response, Ministry of Welfare and Social Justice, they established a committee and they published a report that is a towards equality. And in that report, the findings were quite shocking. The findings were that gender ratio is continuously declining. Women are facing difficulties in education, livelihood, and literacy. And at that time, this report itself said that please give them reservation so that we can involve them in the decision making. But at that time, they provided that reservation should be given like 30%. But there were a lot of political parties who actually opposed because women were not considered as an equal at that time. So this was a mindset at that time. और women ने भी उनका argument ये होता था कि why we are posing this idea, because women is not a community. Women is a category. And to giving a category reservation to category is not a rational reason to provide reservation. So इसीलिए वो कभी भी बिल फ्रेम ही नहीं हुआ. लेकिन 1983 के अंदर एक चौंका देने वाली वही वाला एक्ट कर्नाटका ने किया एंड कर्नाटका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्याय पंचायता एक्ट where it provided 25% reservation to women in local bodies. Afterwards, Andhra Pradesh and Odisha government provided women reservation in local bodies and local panchayat. If we talk about the more historical evolution of this bill, in 1987, the Rajiv Gandhi government framed the committee which provided this national perspective plan for women, and they provided for recommendation for reservation in women in elected bodies. तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1989 was a year of where the seeds of this bill has been presented or born. But actually, we have a lot of opposition when Rajya Sabha could not pass this bill. But in 1992 and 3, if we talk about Narsimhan government, at that time, Panchayati Raj Act passed, where the women, it is mandatory to provide reservation, 33% reservation to women in local bodies. 1996 में भी ये बिल नेशनल लेवल पे लेके आया गया कि प्लीज इस बिल को पास करो, बट राज्यसभा नेवर सपोर्टेड दिस बिल. And then 1996, H.V. Deda government framed this committee, Geeta Mukherjee, under the chairmanship of Geeta Mukherjee, which called as Geeta Mukherjee Report. And she stated that there is a reservation for SC and ST women, but why there is no reservation for OBC? So she provided that, and she also recommended that the provision should be extended to OBC. But this bill, as usual, could not pass. लेकिन अगर हम प्रोग्रेस देखें, स्टेट लेवल पे प्रोग्रेस चल रही थी, एंड बिहार एक्चुअली shook the nation with the Bihar's progressive thought and mindset. It provided 50% reservation to women in local bodies and panchayat, and also it inspired other states as well, and 20 states followed this policy. ठीक है. Then उसके बाद 2005 में 21st century के अंदर
It said that election commission ने बोला कि चलो now it's my time to intervene because government is not doing anything enough, or parliament is not doing anything enough. So government, this election commission framed this committee. That is MS Gill formula, which is called as MS Gill formula, where it said that okay, you don't want to provide reservation to women in parliament or state legislative assembly. Let it provide them platform in parties, local parties, or political parties. So that formula said that it is mandatory for recognized political parties to fill the minimum percentage of women in elected and state legislative assemblies. ताकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर वुमेन आए तो उनको चांस मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा टू कंटेस्टेंट इलेक्शन. ठीक है. बट धीरे धीरे करके 2010 में ये बिल पास हो गया था, बट फिर भी इसका लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि ओबीसी इशू पे ये बिल फिर से अटक गया. देन लॉ मिनिस्टर सेड दैट who is OBC and who is not, it only depends upon the state. इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. तो लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो वी डोंट हैव अ डेटा फॉर एंटायर नेशन आफ्टर 1931, क्योंकि कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं है. ठीक है. तो जब कास्ट सेंसस नहीं हुआ है तो हम कैसे बता सकते हैं हु इज ओबीसी एंड हु इज नॉट. सो ओबीसी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट. लेकिन अगर इंडिया की एट प्रेजेंट कंपेयर करें मदर कंट्री से, तो ये चौंका देने वाली बात है कि 2015 में एक रिपोर्ट आई थी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन. वहां पे पता चला था कि देयर आर ओनली 82 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट इन लोकसभा. दैट इज ओनली 15%, एंड इन राज्यसभा इट्स ओनली 13%, विच इज वेरी लो, वेरी लो. ठीक है. उसके बाद अगर हम इन डेटा को अगर कंपेयर करते हैं नेबरिंग कंट्रीज से या स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज से, तो वी फाइंड दैट रवांडा हैज 61% of women in their decision making. Cuba have 53%. Even Bangladesh has 21% and Pakistan is 20%. तो ये बहुत ही काफी ज्यादा एक शर्मनाक की बात हो जाती है कि इंडिया विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा इम्फेसाइज की जाती है, वहां पे वुमेन को राइट ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करे और पार्लियामेंट के अंदर अपने आके या असेंबलीज के अंदर आके अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन कर सके या चांस ले सके. तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली गवर्नमेंट वाज इन रश टू frame this bill, and luckily this bill has been passed by both the house. If we talk about the analysis, obviously this is a point of concern कि analysis क्या है. अगर pro हम cons के देखे, बिल तो पास हो गया, but what are the pros? Pros में ये बोला जाता है कि it will affect on a positive reservation, it will affect a positive on the society, because there are reports finding that where woman has been reserved, woman seats has been reserved, that area perform well in terms of sanitation, health and the livelihood and infrastructure. तो अगर वुमेन को चांस देंगे तो इट्स प्रोबेबली वो नेशनल लेवल पे भी अच्छा कर सकती है. सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि इट विल इंस्पायर द अदर जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन टू कम फॉरवर्ड, and it will inspire the youth females as well. बट कॉन्स की बात करें तो कॉन्स की बात ये होती है कि रिजर्वेशन देना मतलब स्पेशल प्रिविलेज देना या कोई प्रिविलेज देना. तो इट विल ऑल्सो शो, इट ऑल्सो ऑटोमेटिकली शो कि वो अनइक्वल स्टेटस है वुमेन का, एंड वुमेन इज नॉट परसीविंग एज अ competing on the basis of merit. ठीक है. उसके बाद एक रिस्ट्रिक्ट करता है वुमेन की चॉइस को, वोटर्स की चॉइस को. फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेल और पुरुष एक अच्छा काम कर सकता है, अगर वो सीट रिजर्व है वुमेन के लिए, तो ऑब्वियसली वो वोटर्स की चॉइस को अफेक्ट कर रहा है. उसके बाद इश्यूज आते हैं बिल के साथ. इश्यूज ये है कि इंक्लूजन वुमेन ओबीसी का नहीं किया गया है, बट अगेन द क्वेश्चन कम्स कि डज इट एक्चुअली रियली मेक सेंस टू बाइफरकेट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. क्योंकि अगर आज हम मुस्लिम वुमेन को इनिशियली अगर इसके अंदर डालते हैं या ओबीसी को डालते हैं, तो कल सिख्स, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, दे विल आल्सो डिमांड द सेम. और ये कास्ट इशू ऑलरेडी हमने फेस कर रखा है, रिलीजन इशू 1940 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें ये बोला गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ब्रिटिश ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड वी शुड नॉट प्रमोट सच पॉलिसी इन एनी फॉर्म. एंड तजामुल हुसैन ने भी बोला था कि वी नाइदर डिजायर रिजर्वेशन नॉर सेपरेट इलेक्टोरेट. तो एक्चुअली रिजर्वेशन इज काइंड ऑफ कंसिडरिंग एज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वेपन. तो इसलिए कास्ट के बेसिस पे तो रिजर्वेशन करना नहीं माना गया है इस बिल के अंदर. बट व्हाट आर योर ओपिनियन, प्लीज write me in your comment section. But the alternative methods proposed by the committee were
that if you are not able to provide a reservation at parliament or state legislative level, provide reservation in the political parties, because actually it will improve women's condition. Dual member constituency can be seen, like where male and female both are contesting election. And also try to extend it to Rajya Sabha and legislative councils as well, other houses as well. So if you do this, only then we will able to fulfill our aim and objective. What are the key takeaways? Key takeaways are key. What are the critical analysis on this women reservation bill that you can see, write and see in the form of pro and cons? And what are the suggestions given by the parliamentary committee? Because if you know the status of women at overall and in India per se, you can definitely need to highlight the what are the suggestions submitted by the parliamentary committee. This is a way forward. So thank you so much for the listening. If you have any doubt, please write in the comment section, or you can mail me your doubts as well. See you soon in the next class. Thank you so much.